बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन लेक्चर, जो ओवरऑल अगर हम लेक्चर देखें तो 12 लेक्चर हैं, उसके बी पार्ट पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 12 के ए पार्ट में देखा था कि प्रेडिकेट्स को हमने डिफ़ाइन किया था और उन प्रेडिकेट की जो कुछ वैल्यूज़ के लिए वो स्टेटमेंट बन जाते हैं, वो उसके बारे में बात की थी, उनके ट्रुथ सेट के बारे में। Now we are going towards quantifiers. क्वांटिफायर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो स्टेटमेंट को यूनिवर्सल या एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। मसलन हम पहले यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात करते हैं। So, universal statement can be defined as let Q of X be a predicate and D is the domain of X. A universal statement is of the form all X belonging to D such that Q of X. तो ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये ट्रू है। ये कब ट्रू होगी? इफ एंड ओनली इफ Q of X is true for all X in D. ये जो क्वांटिफायर है यहाँ पर all, this quantifier represents that this is a universal statement. और क्योंकि ये सब सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, इसलिए ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू होगी जब Q of X ट्रू होगा for all X in D. And it is false if and only if Q of X is false for at least one X in D. और जिस X की वैल्यू के लिए ये Q of X false है, that is called the counter example to the universal statement. So now let's come on an example of this universal statement. So let's D is 1, 2, 3, 4, 5 and consider the statement all X belonging to D, X square is greater than or equal to X. Show that this statement is true. So basically this is given that this statement that is universal statement, that is a true statement, but just we are going to show it. So we know that if this universal statement is true, then it is true for all values of X, and X is from this set D. Therefore we will check that X square is greater than equal to X for all the values in this D. That is, if we take 1, then 1 square is greater than equal to 1. Yes, it is equal to. Then if we take 2, then 2 square is greater than equal to 2. Yes, 4 is greater than 2. Now 3 square is greater than 3. 4 square is greater than 4. And 5 square is greater than 5. So here we can see that all the values which are in D, this statement is a true statement, right? So in this statement जो हमने जो टेक्निक यहाँ पर यूज़ की है, that is known as method of exhaustion. यानी वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को लेके कोई चीज़ या कोई स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने को कहते हैं मेथड ऑफ एग्जॉस्शन. नाउ if we take some value in this statement, but here the statement is changed because there X was belonging to some set D, but here X is belonging to the set R, and R is the real number system. So in real number system we can take X any number,
and by choosing x equal to 1 by 2, then 1 by 2 square is not greater than equal to 1 by 2, because if you take square it is 1 over 4, and 1 over 4 becomes less than or equal to 1 over 4, 1 over 2, sorry. So for all x belonging to R, x square is greater than equal to x is not true. It is false because we have chosen a single value for which this predicate is not true, right? So if we change the domain from D to R, then this universal statement becomes a false statement, right? Now let's come on the other statement, which includes the quantifier. This is the existential statement, and let Q of x be a predicate and D the domain of x. An existential statement is of the form: there exists x belonging to D such that Q of x. And this existential statement is true if and only if Q of x is true for at least one x in D. And it is false if and only if Q of x is false for all x in D. यानी ये एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट है x की कुछ वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है, और ये ट्रू कब होगी? जब कम से कम एक वैल्यू के लिए ये ट्रू हो, और ज़्यादा के लिए भी ट्रू हो सकती है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू है कि अगर कम से कम ये एक के लिए भी ट्रू है, बट इट विल बिकम अ फॉल्स स्टेटमेंट अगर q of x false हो for all values of x in D. This symbol is the symbol of there exist, and this is this is called an existential quantifier, right? Now let's see कि existential statement कब true और कब false होगी. By an example, consider the statement there exists m belonging to z such that m square is equal to m. Show that this statement is true. So if m is some number belonging to integers, then we can take m equal to 1, and for m1, 1 square will be equal to 1, obvious. Therefore we have chosen a single value of m for which this given existential statement is a true. Therefore we can say this existential statement is true. Now again, taking some set E 5, 6, 7, 8, 9, 10, and consider the statement there exists m belonging to E such that m square is equal to m. Show that this statement is false. Now here domain is changed from Z to E, and for this E, now our existential statement is a false statement. इसको देखते हैं, that if we take 5, m is equal to 5 here, then 5 square is equal to 5. That is not possible, that is wrong, or this is a false statement. For m is equal to 6, we have 6 square is equal to 6, that is also not possible. And all other values 7, 8, 9 and 10, we have m square is not equal to m. जब भी हम इनका स्क्वायर लेंगे तो वो अपने बराबर नहीं हो सकते. So this existential statement becomes false because for all values of the elements in the set E, this is a false statement, right? यानी किसी existential statement के true होने के लिए उसका कम से कम एक एलिमेंट डोमेन में से लेके उसके लिए ट्रू होना काफ़ी है,
लेकिन फॉल्स होने के लिए डोमेन के हर एलिमेंट के लिए इस स्टेटमेंट का फॉल्स होना ज़रूरी है, राइट?